20 round, and I just think it's a wonderful day to play cricket. Dimensions, we're playing on the same pitch as we played in the second T20 International, with the longest being 81 meters and then the shortest being 61 meters. But let's have a look at what India have done right in terms of slower deliveries, because we're playing on a huge in the series in terms of slower deliveries, and they've picked up 4 wickets, whereas Zimbabwe involved 16 slower deliveries up to this particular point, and you can see the 16 slower deliveries up to this particular point, and you can see the 16 slower deliveries up to this particular point, and you can see but there's still runs to be had. I think now we shave off about 20 runs. 180 is a competitive total. All right, there's some of the crowd, some as well in there. Many an Indian T-shirt. They'll have their favorite players who they've come to watch out for. Yeah, lovely day. The embankment's such a good feature here as well. Let's get to the toss with Tina Moore. Yeah, the series is done as a contest, but an opportunity in this final encounter for Zimbabwe to give the home crowd something to cheer about and give an account of themselves. Right, it's time for the toss. I've got Sikandar, the captain of Zimbabwe, Shreyas Iyer, the captain of India, our match referee, Mr. Andy Pycroft from the ICC, with us alongside. Sikandar, you're going to flick? Tails. Tails is the call. We've got a tail. Shreyas, what are you going to do and why? We're going to bat first, considering that we are playing on the same wicket and anticipating for it to get slower and slower. Anticipating slow and slow. Are you happy with the way this pitch played yesterday? Certainly, we got 220 on the board, and obviously we got phenomenal start the way boys played. And just, coming today in the morning and reflecting back on those performances give me thrills, and obviously want to replicate the same performance again. Now, I was going to say, talking about replication, can we expect something similar in terms of the approach from your batters today? Definitely, it's going to be important for us to adapt as quickly as possible. Can't guarantee how the wicket is going to play. Is it going to be similar to yesterday or not? But as quickly we adapt, the better for us, and then we'll try to put a great score on the board. Completed a series win in that previous match. What's the team looking like today? Any changes? Yeah, we've got 2 changes. Prince is out, so Ashok Sharma comes in for him, and Shivam Dubey is out, Suryan Shetty comes in. All right, all the best for the final. Thank you. Sikandar, you're going to have to bowl first. Are you happy to do that on this surface? Yeah, we're going to have to do that anyway. But yeah, had we won the toss, we were looking to bat first as well. But it wasn't because of the slowness of the surface. We know Sports Club remained pretty good throughout, but we just wanted to bat first today anyway. Talk to us about the mood in the change room. The first 2 games haven't gone as well as we would like. What have you said in the change room to make sure that the lads are up for it today? No, all I said to them was that you all are doing really well. I think what the team lacks is slightly more runs from the captain. So you guys are all doing really good job. The onus is on me to try and rock up as well as a captain. Hopefully God has given us another opportunity to rock up today, and hopefully myself and along with the team as well can put up a good batting and bowling performance. What's the team like today? We are forced into making a change early this morning. Richard Garava unfortunately has got a slight niggle, so he misses out and Wellington Masakadze come in. All right, all the best for this final one. Thank you, Tino. All right, the news then from the middle at Harare Sports Club is that India have won the toss. They're going to bat first. The confirmation of the 2 sides. A couple of changes, as you heard from the India skipper. Suryan Shetty comes into the side, as does Ashok Sharma, who comes back in having played the first one. For Zimbabwe, it is Ngarava who has a niggle, according to Sikandar Raza, and Wellington Masakadze comes in with his left arm spin, and so Evans, Nyamuri and Zarabani to shoulder the pace duties, and Sikandar Raza has someone to help him as far as the spin is concerned. But essentially it's about Zimbabwe trying to raise themselves and India trying to ensure they keep their level. Another beautiful day here in Harare. Out go the 2 umpires.
Fostum Tizla to the left and Langton Rusere to the right. Yeah, all smiles and hoping to be unnoticed as they go about their business. I would love for a day to go along seamlessly as far as decisions are concerned. He's a tower above all his teammates, blessing Muzarabani, and he is such as far as performance is concerned as well. Needs to lead them once again, having lost the toss and India deciding that they would bat first. They're the two openers. They'll be out the blocks like a train. Certainly that will be their intention. That's the way they both play. In thinking about things perhaps a year ago and seeing Abhishek Sharma operate, you'd think, wow, nobody can do it any better than this. But comes along a youngster, Vaibhav Suryavanshi, and he's a whirlwind of his own and making waves as he goes along. An opportunity to watch him once again, an opportunity for them to play once again, to partner up. I'm partnering up with Murali Kartik upstairs. Karts, how are you doing and what are your expectations today with the series done and dusted for India? Good day everyone, good day Tommy. Some wonderful numbers for Abhishek and he's in need of some runs. So that is the first thing I want to see, Abhishek Sharma, because we saw last year during the IPL, or no sorry, this year during the IPL, someone like Yashasvi Jaiswal in the shadow of Vaibhav Suryavanshi. And over here too, you mentioned that Vaibhav Suryavanshi is a whirlwind of his own. And now nobody's talking about, not enough people are talking about Abhishek Sharma. So he needs to come back into notice with his performances, and he's gone quiet. His bat has gone quiet in the last 5 games. So that is the first thing. And the second bit is India have adapted really nicely to these conditions. And you can see, if you look at this game in an isolated fashion, they've done the right thing by winning the toss. So good to see that. May they continue their intensity. Let's play. Yep, we're ready to go. Third T20 International of 3, capping things off. Sikandar Raza with ball in hand. Off the edge, outside arc with a bat, it will go for 4. The first ball, second ball is immaterial. Doesn't have a defensive ball in his body. Doesn't need a look, has a go at it. Pretty healthy edge. And it finds the gap. So India underway. Finds the field this time. Decided that he'd go with the spin first up as he did yesterday. Got to keep your head up, keep going at it, despite the onslaught. And also he's learned from yesterday. Yesterday he operated with a long on. Today he's operating with a long off. Good hand on that. Keep him up. Oh dear! Oh, was shy at the stumps with the keeper prone on the ground. Yeah, Murali there nearly took him out. Might have nicked him actually. Yeah, but look at this. He's not even looking at the keeper. He's thinking run out. And look at Rahmani. Oh, I've got nowhere to go. 4, close. With friends like these, eh? Something's happened. We need to look for some backroom stories. Just hanging on the edge in the circle, so unable to stop the one there, even though that was hit timed quite well. Nice shot, really well played, manipulated into the gap. They're just a breath of fresh air, aren't they?
constantly putting the bowler under pressure. Nothing wrong with it. Right thing, good length. And if he had missed it, or even if it had held in the surface a little bit, it could have been spooned up. But Vaibhav Sooryavanshi, total commitment. This is a result of the pressure. Hits into the offside, decides to stay dead straight. This time he doesn't give himself room. When you look at the previous delivery too, it was around the middle and leg, so he had fabricated a shot. So for a bowler, as you said, you're even under more pressure, trying to get even tighter. Good change in the pace. Yeah, and continually with the testing of the aggression from the batters. You have to evaluate what you've delivered and whether it's what you want, not the outcome of the shots played. A big over to start. 17 without. The leg stump. Right of over. Zimbabwe, Ashok Sharma and Shreyas Iyer in for India. They're winning the toss and deciding to bat first. Here's Blessing Zaraban. Up in the air and does a carry. Yeah, working with that bounce once again and decided that's how he's going to deal with it. And look at this pitch, and it's drier today. Difficult in the way of preparation in the winter time to apply moisture to it because you can't be guaranteed that it'll be burnt out by the sun. And so they'd have left it and kind of swept it and rolled it. And so using it a second time, no surprise that it is drier. You can make out that he was trying to go finer, Vaibhav Sooryavanshi, but this is the kind of matchup you're looking at. Muzarabani to Abhishek, he struggled him. He struggled, in fact, everyone with the bounce and his length. He's got it twice. And every time it's Abhishek Sharma trying to create a shot. The first one trying to go over extra cover, and the second one, a lack of commitment to that punch through the offside. Yeah, we've seen this pattern with Abhishek. There have been times where he's been dismissed for a few low scores and then he has one big one. Yeah, this has happened quite a few times because he's trying to hit on the up. One batter who's got that positive mindset, just like Vaibhav Sooryavanshi, and sometimes the ball is not there to be hit. It is very impressive when you look at Sooryavanshi and Abhishek, and even if you go down to Ishan Kishan, in the way that they go about it, opening batters these days, and you can go around the various countries, and what they then tend to do is set this aggressive standard for themselves, that they are oscillating between, you know, aggressive and very aggressive, and trying to choose the correct shots, but all shot play. Come on, tried to use the feet, but got too far away from him. It's Blessing once again, accounting for Abhishek Sharma. Yeah, third time in a row in the series.
trying to give him some space and then trying to go over extra cover there. Abhishek Sharma, he tried to curb those instincts, 2 deliveries, but ended up going for it, trying to take the attack to the bowler, and instead perishes for 2, 20 for 1. डॉक्टर और ऑयल की रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहता है और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर और तो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें अब दर्द पे घुटने टेकेगा Ishan Kishan next up walks out to the middle, played brilliantly in the previous game, walks in to try and make sure that they utilize this power play as well, well adept at doing so. Nicely played, rode the bounce and controlled it. Top over though from Blessing Muzarabani. 21 for 1. Let's look at India's 11. Abhishek already out. Long batting lineup. Aggression all the way down. Here's a youngster. Yamuri. Young in all aspects. So away it goes for 4 of more of the edge than the middle. Yeah, just his second delivery that Ishan Kishan is facing, and just had a feel for it. Some extra bounce from Newman Nyamari, but he had nobody there. Pretty defensive here, Zimbabwe, and understandable given that they're 2-0 down, and these are all explosive batters, but you still want to give your bowler a chance, at least early doors. Be wide. He went with the wide ploy later in the game yesterday, and it served him well. Also took pace off, because this man Ishan Kishan was on a roll. A couple of wickets early, and then he came in and absolutely dominated. Going right from the off, really. 81 from 44 is what led the side to that 295. And wide again. Having tested the edge, then you can go back. You know, you can just go into the channel rather than wide of it. And also he's getting a bit of shape. Both deliveries, I know sometimes that shape tends to get exaggerated when you release the ball wide outside. It tends to go a lot more rather than from the stumps. I wouldn't mind a slip. Actually, with the ball hard news, the third over. Instead, they've reinforced the offside, and it seems the ploy is to be wide. Yeah, a case of trying to temper your own aggression and the reputation that you have set for yourself. I think falling in the process, Abhishek Sharma.
watchful, a couple of deliveries, and then your inner second skin kicks in. Yeah, it's kind of what I was on about, from aggressive to more aggressive, and then not being a change down gear from there. Yeah, stay in there, and I think if you can stay in there with not 3 in the covers, but 1 in second slip, or take your pick behind the wicket and have him trying to force it through that offside, you might well, because of the bounce that there is here, you might well get another opportunity in that vacant gully region. Yeah, in fact, I would be tempted to get shot fine there, which forces you to bowl good lines. If he hits you from there, so be it. Phil Evans, an extra cover. And just to come back to your point, that's the modern way of batting nowadays. Everybody wants to match up with one another. They want to go hard every ball. But sometimes, there are times where you need to have a look at your own approach. Yes, you've set a reputation for yourself, which Abhishek has. And there was one thing which Hrishikesh Kanetkar said very nicely during the interview. And he said, we want the batters to be themselves, not try and compare themselves to anyone else or try and be someone else. And for me, one of the most devastating batters of our times in the white ball format was Christopher Henry Gale. And every time I think of him, I don't think there was anybody more devastating than Chris Gale. Just a confirmation that there was no edge there. And he had his own method. There was a calm before the storm. The first 10 balls he would always have a look at. And I always used to feel that as a bowler, that was the best time to bowl to him. Because once he got set and had a feel of the surface, then he was going to unleash himself. So sometimes you can take a leaf out of certain players' books. Yes, you want to go hard, but if things aren't working for you, can you change your approach a bit? Yeah, different players, different methods, and you also just kind of think the same outcomes. Aggressive players, someone like a Virendra Sehwag would go for ball 1. A few times Quartet do, but would still go at it. 28 for 1. Most runs for India in a calendar year in T20Is. Ishan Kishan, he's out there and having a super time. And just on top of that list, there was Surya Kumar Yadav. His halcyon days, 2 or 3 years, he was the most dreaded batter to bowl to in world cricket in T20. Nicely ridden that time, fraught with danger, but he's trying to find a way. Suryavanshi doesn't like to face dots, is always trying to get the ball off to the fence. This, just leaving it, suggests a waiting and a picking, looking for the right one. As you're talking about Surya Kumar Yadav, what about Abhishek Sharma? It's not so long ago, it's just a year ago. Bags and bags, buckets and buckets of runs. And where are we? Halfway through the year, just about. Oh my goodness. A commitment to the shot. Even if some might have been a little bit of self-preservation, he was ready for it. And that's out the middle. It's out the ground as well. And it's into the parking lot. Tommy, is your car out there?
through the ball. Yes, a bit of evasive action, but great connect nonetheless. And it kept going like it did in that first T20 international. The only thing was it was in the opposite direction. Excellent shot. After having just ducked under one to watch it. Yeah, good battle on here, liking this. Does Blessing normally say anything? No, he does not. He does get riled. However, you'd not see him say too much to anyone. Yeah, nice length to come back to. That's the general length, also just jags there a little bit off the surface. Oh, nice. Superb work. Right up in the block hole that time. With the batter expecting the short one, perhaps. Yeah, amazing hitting this is. He was actually directed at the helmet when you look at it. He was coming for that head. And he somehow manages to get it away, and manages to get it away so far. Then follows up with that. It's well kept out. My final delivery. Off the edge. It'll go for four. A moral victory. Lucky. But you got to go and be brave and go with the kitchen sink to be lucky enough. 4 runs to end the over. 38 for 1. Well-judged single. It was a hallmark of his batting yesterday, not just finding gaps, but... भारत और जिम्बाब्वे की टीमों के बीच 3 T20 मुकाबलों की श्रृंखला। अंतिम मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में प्रगति पर। पिछले ओवर में काफी कुछ देखने को मिला, जिसमें ये आखिरी गेंद पर मिसक्यूट शॉट, बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर गेंद। और इससे पहले इनफैक्ट मजहर रबानी ने जो पहला ओवर फेंका था उसमें सिर्फ 4 रन खर्चे थे, पिछले ओवर में 10 रन खर्चे। तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, 39 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पूरी आए हैं, पहले ओवर में 8 रन खर्चे थे, अच्छी लेकिन गेंदें डाली थी, लगभग ओवर पिच डिलीवरी और बढ़िया स्कोर है। हाफ वॉली पर लेकर कोशिश जरूर हुई मिड ऑन की दिशा में, लेकिन 4 रन के लिए बाहर। तो ताबड़तोड़ प्रहार दोनों भारतीय बैटर्स के द्वारा। वैभव सूर्यवंशी हमेशा की तरह 14 गेंदों में 25 रन, पिछले ओवर में 1 चौका 1 छक्का। और यहाँ पर हालांकि शायद वो जो एग्जीक्यूशन चाहते थे पूरी तरीके से वो तो नहीं हो पाया, लेकिन प्रोडक्टिव स्ट्रोक में गिना जाएगा, क्योंकि 4 रन जुड़ते हुए फुल थ्रॉटल डाइव दाहिनी ओर। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के कप्तान बल्ले और गेंद से असफल से रहे हैं। ईशान किशन छोड़ पर हैं, 8 गेंदों में 6 रन बनाए हैं। लो फुल टॉस पर पिक किया गया है बगैर किसी रन के। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं शिलेंद्र और मेरे साथ है मेरे साथी दर्पण टेकिया। दर्पण नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र। तो यूज्ड विकेट पर मुकाबला खेला जा रहा है, वही पिच है जिस पर कल का मुकाबला खेला गया था। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से 20 रन निकले थे 9 गेंदों पर, और उसके बाद एक ऐसी बॉल जो उनके ऊपर चढ़ाई करती हुई दिखी, एक छोटी गेंद, उसको लॉन्ग ऑन की तरफ मिसक्यू कर आउट हुए थे। और आज हमने देखा है कि उसी तरह की गेंद को उन्होंने स्टैंड्स में पहुंचाया, जिसके बाद से लेंथ बदली है जिम्बाब्वे ने। एक बार फिर ऊपर कराने की कोशिश, यॉर्कर कराने का प्रयास था वहां पर न्यायमूरी का, वाइड नहीं करार दिया गया है, तो शायद पैड से लगकर गेंद गई होगी,
ऐसा अंपायर का मानना। एक बार फिर देखेंगे रिप्ले में। जी हाँ, बैट से लगता है संपर्क हुआ है। दूसरी तरफ हमने देखा जब भी अटकी हुई गेंद की है, भले ही यूज विकेट हो, लेकिन अभी भी अच्छा कैरी, अच्छा उछाल प्राप्त किया है जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों ने। ऑफ साइड का कॉर्नर पूरा पैक्ड है, 6 खिलाड़ी हैं और इसीलिए कोशिश हो रही है कि मौका मिले तो ऑन साइड में स्ट्रोक्स खेले जाए। इस बार अच्छी फील्डिंग है, लेकिन 2 रन तो मिलेंगे। 7 रन इस ओवर में आ चुके हैं। दूसरी गेंद पर चौका, 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी खासी रफ्तार है न्यामोरी के पास, 135 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। और ये जो पिच जिस पर खेला जा रहा है मुकाबला काफी ड्राई है, क्रैक्स हैं में काफी। हो सकता है स्पिनर्स का रोल अहम हो इस पिच पर। ग्लाइड किया थर्ड मैन की दिशा में, 4 रन 49, 1 विकेट के नुकसान पर भारत 5 ओवर के बाद। एक दफा रोक दफा विकल्प नहीं क्यों बता, एक दफा रोक दफा एक दफा 49 पर 1। न्यामोरी का पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। आज जिम्मेदारी उनके कंधों पर थोड़ी सी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि रिचर्ड इंगरावा, जिन्होंने अच्छी खासी परेशानी में डाला था पिछली श्रृंखला में जब भारत यहां पर आया था, और इस सीरीज के भी पहले मैच में अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, वो आज चोट के चलते बाहर है। उनकी जगह वेलिंगटन मासाकाद्जा को लाया गया है टीम में, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वैभव सूर्यवंशी, वो स्ट्राइक रेट पर नजर डालिए, 212, 1000 से ऊपर रन केवल पावर प्लेज में T20 क्रिकेट में। तो एक ही गेयर में बल्लेबाजी करते हैं, हर 2.6 गेंदों के बाद बाउंड्री ढूंढते हैं। ब्रैडली इवेंस का पहला ओवर और एक और करारा स्ट्रोक, लेकिन सीधा फील्डर के पास। ईशान किशन ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की है। अक्सर लेग साइड पर गेंद को खेलने के लिए जाने जाते हैं। खैर, इस स्ट्रोक पर नजर डालते हैं। यॉर्कर कराने का प्रयास था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को अंतिम क्षण तक देखा और केवल पेस को यूज करते हुए प्लेस किया। ब्लेसिंग मुजराबानी तैनात थे शॉर्ट थर्ड पर उनके पास कोई भी मौका नहीं। हवा में और इनफील्ड को क्लियर करने के बाद गेंद लुढ़कते हुए बाउंड्री के बाहर। 4 रन के साथ भारत के 50 पूरे। रनों के लिहाज से, पावर प्ले के स्कोर के लिहाज से बेहतर शुरुआत कही जा सकती है और दर्शक दीर्घा में भी काफी है। दुनिया में शायद ही कोई जगह होगी जो भी शायद मुश्किल से मिलेगी जहां पर क्रिकेट का मुकाबला हो रहा हो, टीम इंडिया खेल रही हो और भारतीय फैंस वहां पे ना पहुंचे उस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। नए ओवर की शुरुआत हुई है इवांस के द्वारा और दूसरी गेंद पर एक प्रोडक्टिव स्ट्रोक आया है। इस बार तो फुल ब्लेडेड स्ट्रोक है। एम्पायर को भी अपना बचाव करना पड़ा, हाफ ऑडी पर लेकर। मुस्कुराहट चेहरे पर जरूर है, लेकिन थोड़ा सा स्केरी मोमेंट तो था एम्पायर के लिए। जी हाँ, बतौर अंपायर भी आपकी फिटनेस का चैलेंज है आधुनिक क्रिकेट में, क्योंकि देखिए पूरा जन्नाटेदार स्ट्रोक था ये, पूरी जान झोंक दी ईशान किशन ने और अच्छा किया वहां पर अंपायर ने कि हट गए वो रास्ते से। तो 2 गेंदों में 2 चौके और दोनों फुल लेंथ की गेंद पर चौके आए हैं। देखना होगा कि क्या ब्रैडली इवेंस अब अपनी उस लंबाई में कुछ बदलाव करेंगे। कोई बदलाव नहीं है, बल्कि सर्कल को एक बार फिर से क्लियर कर लिया, लेकिन इस बार स्वीपर कवर में प्रोटेक्शन था तो चौका तो नहीं, लेकिन 1 रन जरूर। इवांस के पिता क्रेग इवांस भी खेला करते थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। तो बहुत से, इनफैक्ट अभी दूसरे जो खिलाड़ी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मुजरबानी इनके अंकल, वो भी जिम्बाब्वे के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। तावराई मुजरबानी उनका नाम था। बहुत ज्यादा मैचेस तो नहीं खेले। उनकी जो हाइट है वो तो कमाल की है, 6 फीट 8 इंच। इवांस अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कई बार लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट करने की बात करते हैं, या ऑफ स्टंप के बाद
ड्रिफ्ट टू द कोर हो गया, तो वाइड करार दिया गया उसे। शिवेंद्र, मैं समझ नहीं पाया हूं जिम्बाब्वे की जो आज रणनीति रही है, क्योंकि हमने देखा है श्रृंखला में भी वो छोटी गेंद ने परेशान किया है भारतीय टॉप ऑर्डर को। यूके के टूर में भी हमने देखा, चाहे वो इंग्लैंड के विरुद्ध हो चाहे वो आयरलैंड के विरुद्ध हो, उस छोटी गेंद ने परेशान किया है। आपके पास ऊंचे लंबे कद के तेज गेंदबाज हैं, लेकिन उसके बावजूद आज प्लानिंग ये रही है, आज फुल लेंथ की गेंदें ज्यादा डाली जा रही हैं। और मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि एक टैक्टिक जब कामयाबी उससे आपको मिली है तो आप उससे दूर क्यों जा रहे हैं? जिम्बाब्वे टीम प्रबंधन के पास काफी कुछ फूड फॉर थॉट होगा इस श्रृंखला के बाद, लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि जब शॉर्ट डिलीवरीज आपके लिए थोड़ी सी फायदेमंद साबित हुई हैं, तो फैसला फुल लेंथ डिलीवरीज के पक्ष में ज्यादा क्यों जा रहा है। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर संभवतः वाइड, जी हाँ, वाइड करार दी गई है। फास्टर मोटिस्बा जो कि इस मुकाबले के अंपायर है, जिम्बाब्वे से ही आते हैं। दूसरे अंपायर हैं लैक्टन रुजेरे, माफ कीजिएगा। टीवी अंपायर इकनाउल सापी और रेफरी एंडी पायक्राफ्ट, जो कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिम्बाब्वे के। तो वाइड डिलीवरीज ऑफ स्टंप के बाहर है तो रेयर कमोडिटी, लेकिन यहां पर 2 मर्तबा देखने को मिली। आखिरी गेंद, बढ़िया स्ट्रोक है, 4 रन और मिल जाएंगे। 68 रन हो चुके हैं इस ओवर के समाप्त होने के बाद भारत के। 6 ओवर के बाद 64 विकेट। आता हूं लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे भोजू, अखा इंडिया को बड़ी है, एक दफा हर रोज दफा। तो पावर प्ले में 64 रन बने। भारत ने बल्लेबाजी पहले करने का फैसला किया था। आज टॉस जीतने के बाद श्रेयस अय्यर का टॉस पर यह कहना था कि ये एक यूज्ड विकेट है, तो शायद दूसरी इनिंग्स में थोड़ा सा स्लो डाउन होगी ये पिच और शायद स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद मिलेगी। हालांकि अभी तक जो गेंदबाजी हमें देखने को मिली है, चाहे स्पिन चाहे पेसर, सबको थोड़ी थोड़ी मार पड़ी है। और वेलिंगटन मासाकादजा के हाथ में अब गेंद है, इनको लाया गया है टीम में। और रोचक फैसला था, दिलचस्प फैसला था, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये। भारतीय टॉप ऑर्डर में, टॉप 7 में 5 लेफ्ट हैंडर्स हैं। शिवेंद्र कहते हैं कि आधुनिक क्रिकेट में लेफ्ट हैंडर के खिलाफ लेफ्ट आर्म स्पिनर को गेंद कराने में ज्यादातर कप्तान विश्वास रखते नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि काफी फूड फॉर थॉट होगा जिम्बाब्वे के लिए इस श्रृंखला के बाद। और हालांकि वो एक फोर्स्ड चेंज था जब रिचर्ड एंड ग्रावा, जो कि निगल की वजह से मैच में उनको शामिल नहीं किया गया, अंतिम क्षणों में लिया गया निर्णय। लेकिन वेलिंगटन मासाकादजा का आगमन, अब देखना होगा कि अभी तक जो उन्होंने 2 गेंदें डाली हैं वो तो ठीक ठाक ही रहा है मामला। कोई ऐसा आजादी के साथ खेलने का अवसर नहीं मिला। ये पारी की शुरुआत हुई थी, भारत के बने एकमात्र विकेट गंवाया भारत ने। थोड़े बहुत मिसक्यूट शॉट भी आया और ये आई थिंक शॉट ऑफ द डे था अभी तक का। वो बैवर सूर्यवंशी के बल्ले से निकला था एक और ताबड़तोड़ स्ट्रोक जाता हुआ। हालांकि बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, बाउंड्री लाइन पर लॉन्ग ऑफ की दिशा से दौड़ करके आए फील्डर, बॉल को न केवल रोका बल्कि पीछे भी फेंका और डेफिनेटली 3 रन तो बचाए। ब्रैडली इवांस थे वहां पर। थोड़ी सी आलोचना पिछली श्रृंखला में इनकी हुई थी बांग्लादेश के विरुद्ध, 2 कैच इन्होंने छोड़े थे, जिसके बाद मैच का रुख बदल गया था और सीरीज का रुख बदल गया था वहां से। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी इस प्रयास की। टीवी अंपायर देखना चाहेंगे कि क्या प्रयास सफल था, क्या गेंद को उन्होंने वक्त रहते छोड़ दिया था। ऐसा प्रतीत हो रहा है छोड़ दिया था। जी हाँ, खुश है टीवी अंपायर उस रीप्ले से। मैं समझता हूं ठीक छोर से वेलिंगटन मासाकादजा को लाया गया है। मिड विकेट की बाउंड्री लंबी है, क्या कनेक्शन स्वीट है। जी हाँ, 81 मीटर की वो बाउंड्री, लेकिन उसको क्लियर करने में कामयाब वैभव सूर्यवंशी 42 पर पहुंच गए हैं और भारतीय प्रशंसक बहुत ज्यादा प्रसन्न। ये गेंद तो स्लॉट में थी और पहली जो 3 गेंदें डाली गई थी उसकी तुलना में इनफैक्ट ये स्ट्रोक खेलने वाली ही गेंद थी और
खासतौर पर वैभव सूर्यवंशी जैसे बैटर के सामने। पिछली मरतबा उन्होंने जो छक्का लगाया था वो तो 90 मीटर का फैसला तय किया था, मैदान के किसी भी कोने में जाता तो 6 रन होते। इस बार लंबी बाउंड्री उसे भी क्लियर किया। रन बनाने की रफ्तार भारत की अच्छी खासी है। टारगेट डेफिनेटली 200 से कम तो नहीं सोच करके चल रही होगी भारतीय टीम इस मुकाबले में। 74 रन बन चुके हैं, 7वां ओवर प्रगति पर है। ईशान किशन पिछले मैच में बढ़िया बैटिंग की, फिर से स्लॉट पे आई है, हाफ वॉली पर लेकर उछाल दिया है, क्या सिंगल बाउंस पर गई है, चौका जाता हुआ। 78 रन भारत, 1 विकेट का नुकसान। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा। अरे भोजू, अखा इंडिया को पढ़ू है, एक दफा हर रोज दफा। इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन ईशान किशन के नाम। पिछले मुकाबले में 81 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और यहां पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी इस वक्त पूरी लय में है, तो ईशान किशन ने इस साझेदारी में बैकसीट ले रखी है। तो रेकलेस शॉट उनकी तरफ से हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब मौका मिला हाथ खोलने का तो पीछे भी नहीं हटे हैं। तिलक वर्मा तीसरे स्थान पर, पिछले मुकाबले में एक अच्छी पारी उन्होंने भी खेली थी और दोनों छोर से अब स्पिन। वेस्ली मालवीय के हाथ में गेंद, क्या रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब होंगे? अच्छा खासा अनुभव है। इनफैक्ट जिम्बाब्वे की टीम में 2-3 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 75 या उसके आसपास T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। मालवीय उनमें से एक है। अच्छी फील्डिंग पॉइंट की दिशा में भारत की ओर से पहले 7 ओवर में तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई है। इनफैक्ट पावर प्ले में 64 रन बने, एक नुकसान हुआ जरूर, लेकिन उसका दोनों बैटर्स को तो कोई फर्क पड़ा नहीं। ये तो इम्प्रोवाइज स्ट्रोक है, रिवर्स स्वीप के अंदाज में गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, अन्यथा डेफिनेटली 4 या 6 रन तो मिलने चाहिए थे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी अपनी रेंज दिखाते हुए भाप लिया था कि वहां पर फील्डर इनफील्ड के अंदर है। ये पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर जो ईशान किशन ने चौका लगाया, बड़ी बाउंड्री है वहां पर गोल्फ कोर्स एंड से मिड विकेट की तरफ 81 मीटर की। एक टप्पा लगने के बाद गेंद रोप्स के बाहर। अच्छी वापसी अगली गेंद पर मैरेवेरी की, शॉर्ट ऑफ लेंथ, मिडल और ऑफ स्टंप पर हल्का सा कुछ मूवमेंट दिख तो रहा है गेंद में। सिकंदर रजा पहला ओवर डाला था, हालांकि थोड़ा भुलाने वाला सा ओवर रहा था और इसीलिए अपने आप को गेंदबाजी आक्रमण से अलग कर लिया था, लेकिन बहुत ज्यादा दूर देर तक रहेंगे नहीं, अलग आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। भुलाने वाला ओवर आप कह रहे हैं शिवेंद्र, लेकिन रिकॉर्ड पुस्तिका जो है वो भूलेगी नहीं, क्योंकि सिकंदर रजा के करियर का, T20 अंतरराष्ट्रीय करियर का सबसे महंगा ओवर था वो। 17 रन उसमें आए। इसी बीच 8वें ओवर का समापन 82 पर 1 भारत। डॉक्टर ऑर्थोऑयल की रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्दी रहता है, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तो रन बनाने की रफ्तार 10.25 रन प्रति ओवर। वैभव सूर्यवंशी अपने एक और अर्धशतक की ओर अग्रसर है। पहले T20 में उन्होंने 50 रन बनाए थे और जिस रफ्तार से ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हैं वैभव सूर्यवंशी, आप देख सकते हैं कि 82 रनों में भारत ने 10 चौके और 2 छक्के लगाए हैं, यानी 82 में 52 रन तो चौके और छक्कों की बदौलत बने हैं। 14 सिंगल हैं, 2 ट्रिपल लिए गए हैं और ऑफ कोर्स 20 डॉट डिलीवरीज भी शामिल हैं। तो गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। सिकंदर रजा के द्वारा बेनेट का आगमन हुआ है, स्टेप आउट करके अंतिम क्षणों में स्ट्रोक को चेक किया ईशान किशन ने, और एक्चुअली वो ऐसा लगा कि शायद वो प्री मेडिटेटेड स्ट्रोक के लिए जाना चाह रहे थे और बेनेट ने अच्छी तरीके से पढ़ा, गेंद की लंबाई को कम किया और उसके अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रोक को एडजस्ट किया ईशान किशन ने। डायन बेनेट 64वां मैच खेल रहे हैं। बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में इनफैक्ट कुछ बहुत ज्यादा है नहीं उनके पास,
लेकिन एक यूटिलिटी गेंदबाज के तौर पर इनका इस्तेमाल होता है। 7वें गेंदबाज हैं जिनका प्रयोग आज जिम्बाब्वे ने किया है। अंग्रेजी कमेंटेटर्स मुरली कार्तिक और एड वेंसफोर्ड। तो लगातार बैड लाइन पर गेंद कर रहे हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं देना चाह रहे ब्रायन बेनेट, और इसी बात की उम्मीद भी उनसे की होगी उनके कप्तान ने जब उनको गेंद थमाई गई। इनके अलावा रायन बर्ल का एक विकल्प जरूर है। करते हैं तो विकल्पों की कमी नहीं है जिम्बाब्वे के पास, लेकिन किसी भी गेंदबाज के द्वारा वो जो धार है जिसकी तलाश आप कर रहे हैं वो देखने को नहीं मिली है। अभिषेक शर्मा का विकेट जरूर मिला, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इसलिए मिला क्योंकि अभिषेक शर्मा महत्वाकांक्षी शॉट लगाने गए और उसमें कैच थमा बैठे कीपर को। पारी का 9वां ओवर और 7वें गेंदबाज दिलचस्प है, और भी एक और ऑप्शन है। तो जिम्बाब्वे के पास विकल्प है, लेकिन प्रभावकारी कितने हैं ये बहस का मुद्दा हो सकता है। और इस ओवर में भले ही कोई बड़ा शॉट नहीं आया, लेकिन कोई डॉट डिलीवरी भी नहीं है। बेनेट की आखिरी गेंद लेग स्टंप पर ड्रिफ्ट किया था, रीना से पुश किया, एक रन मिल चुका है। 9 ओवर के बाद नवासी एक विकेट के नुकसान कर रहा है। डॉक्टर ऑर्थोइल की रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्दी रहता है, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टिकेगा। There have been some tall tars. Second over, getting the wicket of Abhishek Sharma. Then this partnership. .69. These two have put together between themselves. Ryan Bennett. Hold that last over. It's Madhaveri now. Using both off spinners, or trying to get the ball to go away from the two left-handers. What you've done is exactly what you said, no length to try and get underneath. Look at that partnership at 70 or 49, a wonderful foundation as we get to the halfway stage of the Indian batting innings. Now you'll just feel that in the next 5 deliveries after the drinks break, you find a different approach where some deliveries where they're playing the percentage game, they'll be very, very much going after the bowling. Look at those projections now. Suryavanshi on 49. They've done well trying to take the ball away. Yes, there have been a few balls which have been short and one can say drag downs, but the left-handers have missed out on it because they're also trying to target the short side. And also the pace has been pretty good from Madhaveri. Bottom edge on this occasion, just an indication of the slowness of the surface. You'd have felt there's a bit of better pace in the surface, the way these two bat and the quick hands to get it out the middle of the bat, but trying to force it, and this is where you talk about that pace. And I think the variation more so, because when you look at the way the over's been structured, there have been a couple which have been in the 90s, but 50 number 2 for Vaibhav Suryavanshi in his T20 career, 50 number 2 in this series. And everyone here, especially the Indian diaspora, are extremely delighted. Yeah, everybody that's come out to see India, a sea of blue away to our left, and in the stands, witnessing again a little bit of history here for Suryavanshi.
who's gone to his second 50 in this T20 international series. And when you're a young man, when you're 15 years old, anything you do becomes a record. He's the only cricketer to smash 2 international T20 50s at the age of 15. Overdone, 95 for 1. In halfway stage of this first innings, and at the 10-over mark, the umpires have called for drinks. हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा। अबे फोटू, अक्खा इंडिया को मालूम है, एक दफा हर रोज दफा। India sitting pretty prettily here in this third and final T20 international here at the Harare Sports Club at the halfway stage of their batting innings. And Vaibhav Suryavanshi has just notched up his second T20 international half-century. Some fine hits as we have come to expect from the young man. Some powerful hits, especially that big six of Blessing Muzarabani. And every now and then, he does show us that he's got timing as well. Yeah, it's hard to look for a chink in the armory as we look at his wagon wheel. Look at those big sixes through the leg side, favorite area for him. You'd probably say down the ground through the offside, not as much, but we've seen in previous games how dangerous he is through there. I think what's also good to see from a young man is after Kyle Jamieson got him of that foolish delivery in the IPL game, he knows that bowlers are going to target him that way. Oh, bowled him immediately after the break. It's Sikandar Raza who brings himself on and breaks the partnership. And it's the highest run getter of the series so far, Ishan Kishan, who's on his way back. Yeah, the skipper brings himself on straight after the drinks break. Down the wicket, I think he gets himself into a little bit of a tangle. Raza follows him, and it hits the top of leg stump. An important breakthrough straight after a little bit of a break with the drinks. Ishan Kishan goes for 29, it's 95 for 2. Yeah, the skipper's here.
at the back of that wicket of Ishan Kishan. Just a hint of turn there. Shreyas Iyer is on his way. Straight after the drinks break comes down the wicket, but look at the adjustment that Raza makes by following him. No hitting zone, in between bat and pad, and then goes on to leg stump. Nicely bowled. He has taken the mantle upon himself in the last 2 days. In the last 2 days to bowl the first over against 2 fiery batters. And he's gone for runs. I don't know whether that affects his effectiveness in the middle overs, because he is somebody who can control that run rate when he bowls in the middle. Yes, it's a big ask, it's a big responsibility, and the skipper did it. And I, for one, was very happy that it was the first over that was bowled by him yesterday. And after he went for that many, is it again the right ploy to do it today? Yeah, with 2 left-handers at the crease. And I think you actually pulled it up yesterday in terms of maybe taking pace off and also the conditions. But more importantly, where does he start so that you protect that final over? But more importantly, responsibility, and that's where Sikandar Raza does really thrive. He's got a lot of variations as well. Tries to catch it, but it's in the gap. Yeah, it wasn't quite there. I think it hits the lower part of the bat, and Sikandar Raza just holds his head. I think that was slightly throw it through the air, and no timing. Yeah, just off the toe end of the bat. India, in fact 101 at the end of 11. After 11, and keeping with what they did yesterday, taken 3 extra deliveries to get to 100. Sleep into his third. And so the point is valid in that middle overs have been quite effective for Sikandar Raza. Also thinks to himself a gut feel. Do I maybe bring myself home in the power play? Get a wicket inside the power play with 2 left-handers at the crease. But then you also think, if you've got Bennett and Madhya, maybe to go through those middle overs, it takes the pressure off Masakata, who would have been targeted by a plethora of left-handers in the squad for India. Big stop. Runs. Shreyas Iyer want to sign off the series with a series victory, having endured a tough start to his captaincy career. But spinners in this series, the degree of turn compared to the first. Hit hard, hit down the ground. That's been absolutely drilled by Vaibhav Suryavanshi. Smokes down the ground. Knew that he's got this wrong, he's missed his line, he's missed his lane. Have a look at this power. Did you see that in the background now? In fact, on the left of your screen, Shreyas Iyer was ducking for cover. No one is safe. Yeah, trying to take it wider. Only ends up going for another 4. Reverse sweep this time in action for the left-hander. As I said, the range that he has
around the cricket field is daunting for any bowling attack. Now he can play shots like this as well with the power. The field is always being tested. The bowlers are always being tested. So it's such a difficult thing to try and keep him quiet. Lovely timing through the onside. Had to reach for it. 12 of the over. 1-1-3 for 2. घुटना कंधा का कमर चाहे जैसा होता है डॉक्टर तो आपको देता है दर्द से पूरी आसार ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं आयुर्वेदिक औषधि They got 219 yesterday. Looking good. Something in the range of 210 wickets in hand. And Suryavanshi well set. He's still going at 164. That can change. His takedown of Padavere sense it's going to continue. Zimbabwe have done well to go to a plan, try and react to the state of the game. Part-time spin has managed to keep things relatively quiet. They've added the wicket of Ishan Kishan as well as Tina Maboya joins me. Good afternoon once again, Ronak. And I think the surface will support the slower bowlers because it's been used yesterday. So nothing would have gone onto the pitch in terms of moisture. Not much, so it's the driest surface that we've had throughout the 3 matches. Phenomenal. Just cannot describe the quality of that shot. It is from the highest order. Suryavanshi, sumptuous. Now, Raza here had almost outdone him. He's held it back just a little bit. He's realized that Suryavanshi, and that's why he's gone the conventional stroke. 102 meters. What a player this young man is. Doesn't even hold a course. It's just a normal shot for him. He hit one of Angarava in the first T20. I thought that would be the shot of the series. It's just checked that, and it's gone 102 meters. It's mind-blowing. Right, Raza, what's your response? You can see that there's certainly just a bit in there. The spinners, a bit of turn. Actually makes the shot that much better. He saved this. I think there's a huge cheer. And I say, even from the home crowd, I'd love to see Zimbabwe get some wickets, but it's fun watching the 15-year-old bat. Such a lovely strike. That's gone a long way, that. Over the VIP and players changing pavilion. In spite of the 6, inside of the over with 10. Take that, Raza. 1, 2, 3 for 2. Safe to say, Vaibhav Suryavanshi enjoys the Harare Sports Club. Extraordinary 100 in the finals of the ICC Under-19 Men's World Cup.
quick 550 in the semis, and they played their group games in Bulawayo earlier this year. It's now got 2 half centuries. Look at the strokes that he's played today. All around the ground. Power, precision, and brute force. Such a wonderful player. There goes Surivanshi. And that one, the icing on the cake. Brad Evans is back. If you get an opportunity to get down to Zimbabwe, make sure you visit this place, the Victoria Falls. World Heritage Site, one of the world's 7 natural wonders. Plenty to do, plenty to see. Stadium being built there for the 2027 World Cup as well. Been up there, Rilla? When you invite me to, I can tell you, I'll admire the falls without venturing on a raft or bungee jumping. I know Tommy said he's done it, he's never doing it again. I wonder if you've done it before? Kind of adventure that you... When I take you, then we can do it together. I'm not going on a raft with you. Change of field. Just going big final third. It's his go-to method, Brad Evans to the left hand with a wide yorker. Executes it quite well. It's quite right on Shreyas Iyer. It's been a quiet series with the bat for a player who otherwise has been in good form since his return to the side and his appointment as captain. He's been India's leading run scorer post the T20 World Cup in this format. Doesn't get all of it, thickish outside edge, but enough to clear the covering. That's going over extra cover. Shreyas Iyer. Brutal strokes in that area yesterday. We did see with the Josh team about choice to bat first based on this surface getting slower and slower. Back-to-back 2 games. Keeler in the deep. Now Brad Evans is furious. It's a huge sigh of exasperation on why Yamuri didn't go for it. I think it was not going to carry. He bailed out in time. Decided to save the boundary. Evans is not happy. I think he's made the right decision here. In fact, he has. He was never going to get himself into a position to be able to take that catch. He was taking the option to stop the boundary. It's 129 for 2. घुटना कंधे का कमर चाहे जैसा होता है डॉक्टर आपको देता है दर्द से पूरी आजादी ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं आयुर्वेदिक औषधि है The coverage through this T20I series on Sport TV or in Zimbabwe and Sub-Saharan Africa on Fancode and United Sports back home in India. यह लगातार आप दुनिया भर में ये सीधा प्रसारण देख सकते हैं। टीवी स्पोर्ट्स के साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं उनको हमारा नमस्कार। मेरा नाम है दत्तिया, मेरे साथ है शिवेंद्र। आखिरी 6 ओवर का खेल, कहां पहुंचेगा भारत का कारवां। खैर मैदान पर जो भी हो, स्टैंड्स में लगातार एनर्जी बनी हुई है। एक और बड़ा प्रहार वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, एक और छक्का। 80 पर पहुंच गए हैं। अब क्या 30 तेरे आंकड़े तक पहुंचेंगे?
खराब डिलीवरी थी मेडवेदेव की। आप ऑफ स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो फिर थोड़ा चलेगा, लेकिन लेग स्टंप के बाहर और वो भी शॉर्ट डिलीवरी, आप देखें कितना आगे आकर के खेले हैं डबल सूर्यवंशी। 90 मीटर, 86 मीटर, 102 मीटर, ये उनके ओवर बाउंड्रीज हैं। और ये जो हरारे स्पोर्ट्स क्लब का मैदान है 68, 175, 50 पिछले मैच में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन आज तो 80 रन पर पहुंच गए हैं। 47 गेंदों में 80 रन है, यानी लगभग 200 का स्ट्राइक रेट है। जब से स्टेप आउट किया था अंतिम शॉट में लगा कि सिर्फ चेक किया, लॉफ्टेड स्ट्रोक के लिए ऑन साइड में ही जाना चाहते हैं। तो भारत का टारगेट तो ये होगा, 15 ओवर चल रहा है तो 200 से कम पर कोई कारवां रुकना नहीं चाहिए, तो स्ट्रेट अवे प्रेशर बनाता है बैटिंग साइड पर, जो भी टीम चेज करने आती है। फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है मेडवेदेव द्वारा। चौथा ओवर है उनका, 28 रन खर्चे हैं, तो कमोवेश किफायती गेंदबाजी उनकी रही है। इस ओवर को छोड़ दिया जाए। एक और खराब गेंद और सजा दी है श्रेयस अय्यर ने। छोटी गेंद, साथ के साथ हाथ खोलने का मौका चूकने नहीं वाले थे भारतीय कप्तान। तो लेवल है अब दोनों ही बल्लेबाज और एक्सेलरेटर पर पांव रखेंगे, क्योंकि ये वो फेज है पारी का जब आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना। 8 विकेटें हाथ में हैं, लंबा बल्लेबाजी क्रम है और ऊपर से ऐसी गेंदबाजी होगी तो जरूर प्रहार करेंगे। एक और करारा प्रहार, गैप में गेंद, एक और चौका। बहुत ही खराब गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट डिलीवरीज। इस बार तो इनफैक्ट अगर लग रहा था कि श्रेयस अगर छोड़ देते तो शायद वो वाइड डिलीवरी हो जाती, क्योंकि बहुत बाहर थी, लेकिन रूम मिला ऑफ स्टंप के बाहर और ऐसी गेंद को छोड़ना बनता तो नहीं है। भले गेंद हवा में थी, लेकिन सर्कल को क्लियर किया। 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज, पहली गेंद पर 6 रन, 15 रन तो आ चुके हैं इस ओवर में और बिल्कुल वही हो रहा है जो चाहिए। सिकंदर रजा विचार विमर्श कर रहे हैं अपने गेंदबाज के साथ, तो समझा के तो गए। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात है, लेकिन उस तक गेंद पहुंची नहीं। रायन बर्ल ने दौड़ जरूर लगाई बाउंड्री से अंदर की तरफ। पिछले ओवर में हमने देखा ह्यूमन नाइन मूरी फाइन लेग पर तैनात थे और बाउंड्री से अंदर नहीं आए वो, जिससे अच्छा खासा निराश हुए थे ब्रैडली इवंस, जो पिछला ओवर डाल रहे थे, चाहते थे कि कैच अटेम्प्ट किया जाए। खैर इस बार तो कोई मौका नहीं था। 16 रन इस ओवर से। क्या यहाँ पर फील्डर, जी हाँ, कमाल का कैच ब्रैडली इवंस द्वारा, सूर्यवंशी की पारी का समापन। और जिम्बाब्वे, क्या ये वो मौका है, क्या वो क्षण है